and gentlemen, what happens in Indian politics can give an existential crisis to irony. Imarate-Sharia, an organization that was formed to, and I quote from their own website, establish Sharia and to seek implementation and application of Islamic laws, hosted a gathering in Patna. The rally, viewers, was to oppose the new Waqf law. Nothing exceptional about that. But here is where the paradox enters the stage. A gathering to shield the very same Waqf provisions that face legal scrutiny for violating Articles 14, 15, 25 and 26 of the Indian Constitution were called Waqf Bachao, Samvidhan Bachao. Well, wait. There is another act of this satirical theatre. From this very stage, while sharing the pledge to save the Constitution, RJD leader and chief ministerial face of the opposition alliance in Bihar, Tejasvi Yadav proclaimed, Waqf law will be thrown into the dustbin. Yes, a law duly passed by both houses of parliament and stamped by the president is equivalent to rubbish for these self-declared flag bearers of constitutionality and Constitution Savers Brigade. But should we expect anything different? Because this disdain for rules, legislative, executive and judiciary is a pattern. Who can forget Rahul Gandhi? 12 years ago, he publicly called his own government's ordinance utter nonsense and said it should be torn up and thrown out. Do you get the drift? Somewhat, ladies and gentlemen. The BJP explains what fuels the contempt. The love for a certain vote bank. It was to a coincidence that the stage set up by an organization that has Sharia in its name brought not just existing alliance partners, RJD and Congress, but even prospective alliance partners like AIMIM and even enemies like Pappu Yadav, all of them together. According to the BJP, the ideology that these stakeholders in Bihar politics share is political expedience and appeasement, or as Sudhanshu Trivedi put it, these are not Samajwadis but Namazwad. एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है, गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। देश किसी के बाप का देश नहीं है। ये बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। ये मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत इस्लामिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हमारी औकाफ की जायदाद पर अगर किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो हम अपनी गर्दनों को कटा सकते हैं, लेकिन खुदा के घरों को उजड़ने नहीं देंगे। Continuing with contradictions, Rahul Gandhi, who could not attend the Patna gathering, sent a message calling a Sharia backing group progressive. He asked the proponents of Islamic law to educate people about Constitution's ethos. And while the leader of opposition praised those who treat a constitution as dispensable, his party president Mallikarjun Kharge said they would fight anyone who fiddles with the Constitution. And RSS is always against the poor people, the downtrodden and scheduled caste and other communities. They are going to touch any word in the Constitution. We will fight tooth and nail. The assertion of veneration for Constitution is duplicitous because
Opposition-ruled states like West Bengal, Tamil Nadu and Kerala refused to implement a central legislation, the Citizenship Amendment Act. Last year, Mamata Banerjee's government tried to subvert that very secular nature of Samvidhan they swear to protect by trying to surreptitiously include Muslims under OBCs. They added 76 castes to the list, out of which 64 were Muslim groups. The unconstitutional move was struck down by the High Court. Similar attempt to provide religion-based benefits was also made by the Congress party government in Karnataka. The state assembly passed a resolution to give 4% religion-based quota in government contracts to minorities. And of course, the largest promise by Samajwadi Party in 2012 that fake terror cases against Muslims will be withdrawn. Mind you, only Muslims, not any other community. So will Mr. Kharge speak to these leaders, all now Congress alliance partners in the India bloc, and talk to them about what the Constitution stands for? But ladies and gentlemen, on the News Hour tonight, we are asking the Motorola legitimate question. What is common in all of the above exceptions being made to norms? The M factor, which brings me to this question. Does Sharia come above Samvidhan for the sake of power when it comes to our opposition? That's the question, and that's the debate on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. Joining the debate tonight, Satya Prakash Mishra, leader of the JDU, Dr. Anand Ranganathan, author, Sanjay Jha, author, Vivek Silas, national spokesperson of the Samajwadi Party, Waris Pathan, national spokesperson of the AIMIM. Also joining the debate is Professor Naval Kishore Yadav, national spokesperson of the RJD, Dr. Sudhanshu Trivedi, member of parliament and senior spokesperson of the BJP, joining us in just the next 30 seconds. My first question goes to Mr. Sanjay Jha. Sanjay Jha, really? Constitution saviors? Actually addressing a whole Gandhi Madan crowd in Patna from an organization which propagates Sharia? The only thing common between all those political parties is their appeasement, their polarization, and their dependence on the M factor in elections for votes. That is reason good enough to even support statements that say that the Waqf law should be thrown into the dustbin, even though it's been passed by both houses of parliament. Really, Dr. Sanjay Jha, is that the new savior of the Constitution brigade today? Well, Navika, I'm very glad that before I've started answering your question, my good friend Sudhanshu Ji is on the program, because I think his presence is very critical to this debate. Point number 1, I mean, we are talking about the BJP having a respect for the Constitution of India? Really? I mean, they want to remove the RSS, the gurus of the BJP, want to remove the word secular from the Constitution along with socialism or socialist. Basically, let's look at the word secular. If the BJP and the RSS openly have a problem with the word secular, why are we surprised at their very anti-minority and particularly anti-Muslim rhetoric, as well as the things they do on the ground? Can anybody ignore that today we are no longer discussing, like we discussed Muhammad Akhlaq and Junaid Khan once upon a time? There is no conversation of the mob lynching violence that is going on in this country, left, right, and center. The BJP has normalized violence against Muslims or the hate against the minorities into an absolutely new normal. I mean, that is the biggest tragedy of our country and a challenge, in my opinion. Point number 2. Since Asauddin Owaisi, I think I'm glad to see Waris Pathanji is here on the program. The BJP or the government chose Mr. Owaisi to be one of the ambassadors of this country, to go and talk to the rest of the world following Operation Sindoor. And I think Mr. Owaisi responded extraordinarily well, like a true patriot. May I therefore request Sudhanshu Ji's party that since you have now acknowledged publicly
that Mr. Owaisi represents the true ethos and pathos of India, why don't you completely scrap the Waqf bill? Because Mr. Owaisi tore it in Parliament, and he said that the Waqf bill is a violation of the Muslim rights or the Muslim rights, all the things that they hold very core to their belief and their practices. Point number 3, Constitution and the BJP. You have a gentleman called Nishikant Dubey, unprecedented in the history of Indian politics. A member of Parliament says that the Chief Justice of India, Sanjeev Khanna, former Chief Justice of India, was creating civil wars in the country. The Supreme Court was going to create a cultural or a religious war in the country because they paused the Waqf Amendment Bill. You know, Navika, I'm pointing out for the benefit of your viewers, the dangerous politics of division is now spilling over into a very ugly territory. And these will have serious repercussions for the country. Mr. Modi is here today. Mr. Modi will be voted out tomorrow. But we will live with a lot of problems for a long time to come. Well, Sanjay Jha, I completely appreciate that in a democracy, who's here today and who'll be here tomorrow, we don't know. But at least 3 elections, you have failed to remove Mr. Modi despite your best efforts. And secondly, at least talking about a Chief Justice, I don't condone it, but I'm saying that he was talking and he can be reprimanded for talking about the Chief Justice. You know what the Congress party did about Chief Justices in the past. You know that today the poster boys of saving the Constitution, what they have done to the Constitution in the past. So just once in a while, you know, a little bit of self-introspection is called for before the lectures and the gyan that you give the nation. But Dr. Sudhanshu Trivedi, to the points raised by Dr. Sanjay Jha, your response. I would like to respond what Sanjay Jha has said that Asaduddin Owaisi has been co-opted, sir. Several members of your party have been co-opted. Mr. Shashi Tharoor, who is a member of the Parliamentary Standing Committee on Foreign Affairs, nominated by your party, has been opposed by you. And mind it was only Rahul Gandhi whose name has been mentioned by Pakistan in its dossier against India a couple of years back. And it was Rahul Gandhi who has used the word surrender, which was not used by even Pakistani army chief. It was not used by Pakistani's defense minister, not by Pakistan prime minister, and not by the terrorists like Hafiz Saeed and Masood Azhar. So your party trying to become more Muhafiz than the Hafiz Saeed, and that's why your party's statements were becoming the darling of Pakistani media, Pakistani parliament, Pakistani military briefing and Pakistani dossiers. So I think the party like you, how distorted you have came from the era of Gandhi and Nehru and Indira to the era of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, it can be understood. But now I would like to answer your point. You are asking about the core belief. Where is the core belief? The Waqf word is not at all there in the Quran. It's not at all. It has been only used by the mullah and Maulvis for their personal benefit and the type of provisions which your party has opposed. I'm addressing the millions of viewers, Navika, which you are watching your show. Are these, I have said in the press conference, I'm repeating it. These type of provisions are neither in Saudi Arabia, the birthplace of Islam, nor in Indonesia, the biggest Muslim country, nor in Turkey, which was the seat of Caliphate, and nor in Pakistan or Bangladesh, and not even Iraq and Syria, which is considered the area of ISIS. So you want to become more fundamentalist in the case of Sharia than ISIS, then Turkey, then Saudi Arabia, and then Indonesia. Otherwise, I challenge Mr. Sanjay Jha, who is quite a learned person. He should tell me a single country in the world, Muslim country, which was having these type of provisions which you want. And you tell me the single secular country in the world which is having Waqf Act, which is having triple talaq, which is having mehram, which is having halala, which is having 4 wives, and which is having Sharia above the constitution. I would like to remind to the voters, एक बार 400 पार हुआ था ना, जैसे 400 पार हुआ था राजीव गांधी के जमाने में, तो शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रौंद कर शरिया को उससे ऊपर कर दिया गया था. That's why the country is witnessing and the politically awakened people of Bihar is understanding
that these people are trying to convert the constitution of Baba Sahib Ambedkar. They're just trying to put the mask of so-called Manusmriti Samvidhan, for which not even a single provision is there, but a dozen provisions of Sharia are there endorsed by their government. So they want to convert Baba Sahib Samvidhan into Sharia ka farman. And that's why they are supporting those type of statements which was asked to me in the press conference. कि जब वो नेता कह रहा है कि मुसलमानों के लिए शरिया ही सबसे ऊपर है और उसके बाद कुछ है, not even a single whisper has been made by India Alliance. So it's a very serious matter, and now country is on the brink of a very historical turning point in which they have to decide कि ये short term की राज चाहिए या फ्यूचर की बर्बादी चाहिए. इस जंग के फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के साथ. Point made by Sudhanshu Trivedi there, and Sanjay Jha, Rahul Gandhi also made a statement that Imarat-e-Sharia, the organization that organized this whole rally, they should actually teach the country what the constitution is all about. They should teach. The people who believe that Sharia is the law that should prevail in this country are the people who should actually teach this nation what the constitution is. And Naval Kishore Yadav ji, I want to ask you, Imarat-e-Sharia वाले बोले, ठीक है, आप शरिया लॉ ले आइए, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दीजिए ना. दोनों चीजें कैसे साथ में चलेंगी? You can't pretend to be saviors of the constitution and proponents of the Sharia law. Both can't happen. That is hypocritical. And number two, when a law that has been passed by the parliament, that has the assent of the president, if that is going to be thrown in the dustbin, then kindly, can you tell the nation today that you don't really care for the constitution? You only care for appeasement, you only care for your vote bank politics, and that is what you were doing in the Gandhi Maidan in Patna. नाविका जी, ये तो आपको पता होगा कि जो तीनों कानून मोदी जी ने वापस लिए, एक साल तक आंदोलन करने के बाद, जिन किसानों को आतंकवादी कहने के बाद, जिन किसानों को रोकने के लिए वो सारे कार्यक्रम किए जो आतंकवादियों को रोकना चाहिए था, उसके बाद जो तीनों कानून वापस लिए, वो क्या टाइम्स नाउ के अलमीरा में है? वो भी तो कूड़ादान में ही है ना. जो कानून बनाएंगे वो तो कानून तो जाहिर है कि बनता है वहीं से. कानून तो 42nd अमेंडमेंट के बाद 44th अमेंडमेंट भी आया. आपको मालूम होगा कि बहुत सारे चीज उसमें से निकाल दिए गए. और आपको ये सबसे खतरनाक बात ये है कि आज के भाजपा और उसके पीछे एक संगठन है जो कि भारत को जिसने गुलाम बनाया उसका गुलामी कर रहे थे. आज वो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को हटा देना चाहिए. तो ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि रहेगा क्या फिर. संविधान जलाने वाले लोग, संविधान को तार-तार करने वाले लोग, वैसे लोग जो आज कहते हैं, एक दिन कहते हैं कि जातीय जनगणना से जातिवाद फैलती है, और जब वोट की बात आती है तो कहते हैं नहीं, जातीय जनगणना करा सकते हैं हम. ये जो दो मुहा दूसरा चरित्र वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए. हम जो भी कहते हैं संविधान बचाने के लिए कहते हैं. जो मसला है वो धार्मिक अधिकार का है, फंडामेंटल राइट्स का है. उसके आधार पर उसको कोशिश कोई भी करेगा, उसको हम लोग कूड़ेदान में फेंकेंगे. इसमें क्या दिक्कत है आपको? अगर आपको इतना दिक्कत है हमारी बातों से, जो कि आप कोशिश कर रहे हैं तमाम तरह के अपने लॉजिक देकर या तर्क देकर कि हम लोग जो कह रहे हैं वो गलत है, तो गलत अगर हम कर रहे हैं तो सही कौन कर रहा है? जो सेकुलरिज्म हटाना चाहता है वो कम्युनलिस्ट तो होगा ना. जो सोशलिज्म हटाना चाहता है वो गरीब विरोधी तो है ना. ये तो किसी भी राजनीतिक विज्ञान के साधारण ज्ञान रखने वाले को ही पता होगा कि those who do not want secularism are communal, and भारतीय जनता पार्टी is utmost fit that definition. Those who are working for the capitalist, crony capitalists, they are anti-socialism. आपको इसको मानने में क्या दिक्कत है? तो इसलिए हम जो बात कह रहे हैं वो देश हित में कह रहे हैं, संविधान हित में कह रहे हैं. अब नवल किशोर यादव जी, आपने इतना कुछ कहा वक्फ के बारे में, और आप कह रहे हैं बड़ा बेकार बिल है. मैं सुनवा देती हूँ. लालू प्रसाद यादव जी को जानते होंगे ना? जानते होंगे, आपके पार्टी के चीफ हैं. मैं सुनवा देती हूँ. 7 मई
2010 को उन्होंने संसद में क्या कहा था? अरे धीरज रखिए मेरे भाई, धीरज रखिए। आई एम प्लेइंग आउट लालू प्रसाद यादव फ्रॉम 2010 इन लोकसभा। लिसन। ये कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंडियां बना रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये लालू जी किसके बारे में बोल रहे थे? कौन से कानून के बारे में बोल रहे थे? ये वक्त ये जो पूरा है ये किसके बारे में था? सुधांशु जी अब आप जवाब दे दीजिए नवल जी। अरे ये क्या कर दिया है ना? हाँ, मैं बिल्कुल। अब आरजेडी से है क्या वो? देखिए मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। आरजेडी ज्वाइन कर लिया है क्या सुधांशु? नहीं, मैं जवाब, अरे भाई अब सुनिए, इसमें कोई जवाब की गुंजाइश नहीं है। नहीं, आरजेडी से जो आप हैं, देखिए प्रोफेसर नवल किशोर यादव, बीजेपी के भी लालू जी ने बोला था कि भारत जलाओ पार्टी है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है वो चारों तरफ तनाव पैदा कर रही है। नवल जी डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? नवल जी डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? मुद्दे पे रहते हैं ना। आपने कहा वक्त कानून बेकार है, मैंने लालू जी सुनवा दिया। अब आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? नहीं, ये लालू जी, ये आप वाले लालू जी है, कोई और तो नहीं है ना? उत्तेजित है, उससे ज्यादा कोई हो भी नहीं सकता। देखिए मैं प्रोफेसर नवल किशोर जी के लिए इतना परेशान है। देखिए प्रोफेसर नवल किशोर जी के लिए परेशान आप नजर आ रहे हैं, गला पकड़ रहे हैं बार बार। देखिए परेशान कौन है, दर्शक देख रहे हैं। प्रोफेसर साहब, वो तो प्रोफेसर साहब, एक लाइन में कहता हूं, जो प्रोफेसर, देखिए जो प्रोफेसर नवल किशोर जी का इस बाइट सुन, क्या तरीका है सर, बार बार डीप डिस्टर्ब मत करिए, प्रोफेसर की तरह बिहेव करिए सर। हम लोग कोई बच्चे नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई पड़े। देखिए प्रोफेसर नवल किशोर जी के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा। जब आपने लालू जी का यह सुनवा दिया कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। अब मैं बताना चाहता हूं जो लालू प्रसाद यादव जी ने बोला उसके आगे की बात पूछना चाहता हूं। नवल किशोर जी, ये बताइए, इतनी जमीन है वक्त के पास, तो बताइए बिहार में कितने स्कूल बनवाए हैं वक्त ने, कितने हॉस्पिटल बनवाए हैं, कितने यतीम खाने बनवाए हैं, कितना मुस्लिम तलाकशुदा और बेवा महिलाओं के लिए बनाया है, कितने मुस्लिम रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए हैं, कितने मुस्लिम बच्चों के लिए वो बनवाए हैं। हां, शॉपिंग मॉल पाए जाते हैं, होटल पाए जा रहे हैं। खुद लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं फ्लैट बना दिया गया है, सब बहुत लूटपाट के बराबर कर दिया है। मगर क्या बताएं साहब, जब वोट पाना है तो इसे समाजवाद वाले लोग खड़े हैं कि गरीबों को नहीं मिलना चाहिए, सरमाएदारों को मिलना चाहिए, जो होटल बनाने वालों को मिलना चाहिए, मॉल बनाने वालों को मिलना चाहिए, फ्लैट के मालिकों को मिलना चाहिए, मगर गरीब को नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं सर, पढ़े लिखे प्रोफेसर को जब 9th पास व्यक्ति को डिफेंड करना होता है, वो कह रहे हैं कि साहब किसान कानून वापस लिए गए तो कूड़ेदान। अच्छा बताइए, मोदी जी प्रोफेसर है साहब, पार्लियामेंट से पास हुए, पार्लियामेंट से विड्रॉ हुए, पार्लियामेंट से पास हुए, पार्लियामेंट से विड्रॉ हुए। अरे भाई मोदी जी का शिक्षा बताओ ना। भाई बेशरम कौन बन रहा, सबको दिखाई पड़ रहा है। अरे भैया सबको दिखाई पड़ रहा है। देखिए 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 कैसे इनका ट्रिगर ऑफ हो गया, कैसे ट्रिगर हो गए भाई। मैं बताओ ना, पछता नहीं है ना कोई। अरे जितने आप बताओ ना पहले, अब आप बेशरम की तरह बात करते हो तो क्या जवाब होगा? नवल जी लगता है चुप गया आपको नवल जी। अरे भाई सबको दिखाई पड़ रहा है। लालू यादव जी के स्टेटमेंट के देखने के बाद सर शर्म से चुल्लू में पानी में डूब मरना चाहिए था। आप मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। कौन जा रहा है? मुद्दे की बात कर रहे हैं साहब, वक्त की बात कर रहे हैं। IIT करिए आज, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। बताइए कितने हॉस्पिटल हैं, बताइए कितने स्कूल्स हैं, बताइए कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने यतीम खाने हैं, बताइए। शॉपिंग मॉल्स और होटल बने हुए दिखाई पड़ते हैं, मगर गरीबों के लिए कुछ नहीं है। मगर समाजवाद को वही सही लगता है। क्यों करते हैं बताओ? बिहार में 20 साल से क्या किए हो बताओ? नवल जी
बताते क्यों नहीं? नवल जी पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। वो जब से लालू जी का साउंड बाइट चलाया है ना, तब से आप थोड़े उत्तेजित हो रहे हैं। थोड़ा सा आराम से। लेकिन आज विवेक साइलेंस इज ऑल्सो विद मी इन द स्टूडियोज। एंड विवेक साइलेंस, आई वांट टू आस्क यू, आज बीजेपी ने और सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक और भी सवाल उठाया है। आप समाजवादी हैं या नमाजवादी हैं? क्योंकि शरिया लाने वालों के खिलाफ तो आपने कुछ नहीं बोला, ये इमारतें शरिया कुछ नहीं बोला आपने, नॉट वन वर्ड, यू हैव नॉट अपोज्ड इट। एंड सेकेंडली, all the दान and दक्षिणा to the मौलवीज is fine, but बाबा बागेश्वर की बात ले आए अखिलेश जी खुद कि 50 लाख मिलता है तब कथा वाचन करते हैं। ये मुझे सवाल का जवाब दे देंगे, नमाजवादी के समाजवादी? देखिए नाविका जी, आपने ये सवाल कई बार पूछा है और 2024 के चुनाव में भी पूछा। लगातार भारतीय जनता पार्टी और नोएडा का मीडिया हम पे यही हमला करता था कि हम नमाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी, आपको बता दूं, खुले शब्द में बता दूं, समाजवादी पार्टी पीडीए के आधार पे चुनाव लड़ती है और लड़ती आई है, जिसका रिजल्ट हमने 2024 में देख लिया कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ। सुधांशु जी भी उसके गवाह थे, बैठे थे स्टूडियो में। क्या हाल हुआ उत्तर प्रदेश में आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम कर दिया। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री मात्र 1,52,000 वोट से गिरते पड़ते बनारस से किसी तरह जीता है। और बनारस में हमारी, आपकी और आनंद रंगनाथन साहब की डिबेट भी हुई थी। देखिए, तेजस्वी जी ने सिर्फ आज अल्पसंख्यकों में बात नहीं की, उन्होंने बात की गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, सबकी बात की उन्होंने। और जिस तरह से इसको एक नैरेटिव बनाया जा रहा, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं गलत है। और अभी लालू प्रसाद जी की बात हो रही थी, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा, तो मैं बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू साहब ने माननीय प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा था और आज उन्हीं की बैसाखियों पे आप चल रहे हैं। इसलिए फालतू भाषण सुधांशु जी मत दीजिए। आप बैठ के इस तरह से बात करते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक लीजिए। जैसे कि संजय झा साहब ने बताया कि आज सेक्युलरिज्म को लेके आरएसएस ने क्या बात की है, तो क्या वो देश के लिए खतरा नहीं है? आप सेक्युलरिज्म को देश से क्या खत्म करना चाहते हैं? ये बात बिल्कुल नाविका जी सरासर गलत है। Asking for a debate is ending secularism. No. Asking for a debate is ending secularism. Okay. But saying that a law that has been passed by the parliament and given assent by the president can be thrown into the dustbin, and that is not sacrilege. That is about constitution. नहीं, सत्यप्रकाश जी, ये इतना सारा हिपोक्रेसी, इसका क्या करेंगे? देखिए, कूड़े दिमाग से निकली हुई एक बात है। तेजस्वी जी का दिमाग कूड़ा है। उनके परिवार ने 15 साल राज किया, बिहार को कूड़ेदान बना के रखा। तो हम बिहार की जनता को समझते हैं, जानते हैं कि वो बिहार को कूड़ादान नहीं बनने देगी, डस्टबिन नहीं बनने देगी। अब ये क्या है कि उन्होंने शरिया को चुना है रास्ता। वी डू हैव रेस्पेक्ट फॉर एवरी काइंड ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ, वेदर इट इज इमारत शरिया और जमायते उलेमा हिंद, whatever they are working for Islamic scripture and whatever they are concerned about, but trying to just sabotage the basic fabric of the society by utilizing that dice today in the Gandhi Madan, that is really absurd. So many people, even Salman Khurshid, मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार? I didn't interfere. बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? जवाब दीजिए। Interfere. कौन होगा? Please don't do बिहार का मुख्यमंत्री आप अखिलेश जी है क्या? I listen you very carefully. अखिलेश जी नहीं है। I listen you very carefully. Okay, I was listening. That's This not is the not debate fair. today. This is not fair. Please silence. Don't do that. It comes down I to was the Bihar I was politics. just listening you very patiently. Just have a patient listen to. ये कौन लोग आग लगाने पर वहां थे? मामूर का मतलब होता है नियुक्त करना। ये कौन शहर को मक्तल बनाने वाला है? बिहार को आप फसादवाद में ले जाना चाहते हैं, जब आप शरिया को संविधान से ऊपर बताते हैं। हमारे लिए शरिया नहीं, संविधान ही जरिया है। द लॉ इज सब जुडिस इन द सुप्रीम कोर्ट। वक्त बिल सुप्रीम कोर्ट में है ना, समझ में आता है ना। तो तेजस्वी यादव ने ऐसी हिम्मत इसलिए की कि कूड़ेदान समझते हैं वो बिहार को वहां फेंकेंगे, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही एक कैबिनेट द्वारा पास लॉ को फाड़ चुके। तो आप लोग कहते हो फैशन है, राज का दर्जा दिलाइए, जस्ट राज का दर्जा दिलाइए बिहार को।
हमें मिल चुका 20 है। साल से नहीं दिला पाए तो मनमोहन सिंह कहां मिल गया? किसने दिला दिया? जब 9-10 साल तो क्यों नहीं दे दिया? 2015 में मोदी जी ने कहा था, मनमोहन इसी सिंह गांधी मैदान से प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे विशेष दिया? राज का दर्जा देंगे। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे, क्यों नहीं ले लिया? आप केंद्र में आप बिहार मंत्री थे, में लालू विशेष राज यादव का दर्जा दिला पाए? नहीं दिला पाए ना, इसे भाषावादी मत करिए यहाँ बैठ के। ठीक है, कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई मत करिए। सवाल पूछ रहे हो। Don't do that. कुत्ते Don't बिल्ली do वाला that. बात Don't do that. One minute, Don't do gentlemen. that. 1 minute, gentlemen. I will We never come back. debate with you. When The we come final back, thing is let's this. come back to I am the coming debate. to a Let's point. come back I to am the coming to a point. They do not have any respect for the constitutional process because the law is sub judice in the Supreme Court. We should wait for the final verdict regarding Waqf bill. We respect every section of the society and their aspiration, whatever their objections are. Supreme Court definitely will go into the detail. Why they are saying the law passed by the parliament they will throw in the dustbin because their mind is dustbin, their culture is dustbin, their whole party is dustbin, their facade, they are creating facade because they believe in parivarwad. The only objective of Tejaswi Yadav and every kind of people, Rahul Gandhi, they only want to grab the power by just कि पापा को मुख्यमंत्री बना दो, पापा को मुख्यमंत्री बना दो। निकाल कुमारी कह रहे हैं ना, वो परिवारवाद नहीं दिख रहा। बिहार Let me निकाल 1 minute, gentlemen. Let me. Bihar now today understand Okay, what let me get in. Let me get in, Mr. Baris Pathan. No. The Bihari people out of Bihar. All right, gentlemen. 1 minute, calm down. 1 minute, calm down. 1 minute, calm down. Calm down. I'll have to call the fire brigade. I will have to call the fire brigade. But let me I get was in. not expecting such kind of thing from Silas. I was hearing him, listening in very carefully. You can't- He jumped like a frog. keep Every going now and and then saying anything you like behave like a want. frog. Don't interfere when I am speaking. The final thing is that since last 20 years, the Nitish Kumar is the leader and BJP has openly said tomorrow that Nitish Kumar will be the chief minister. No in one the has said that. Who has said that? 25 elections. Who has said that? So why do Who has said But that? I will not I want to allow you to know. derail my debate. Let me, 1 minute, the debate tonight is not on who will be the CM. I'm talking about the Waqf bill. And I want to get in Baris Pathan. I want to get in Baris Ask him whether he said that Nitish Kumar will be the CM. Vivek dumb person. Silence, Satya You don't Prakash hear ji, it. 1 minute. Vivek Silence If and you Satya not have Prakash jumped, I ji. Just calm consider down. my Calm remarks down. will be आपके सामने पानी पड़ा है, पानी Thank you. पीजिए, आपके सामने भी पड़ा है. यार करते हो तुम? Baris Pathan, I want to ask you a question, and I'm going back to Imarat-e-Sharia and the fact that Waqf law should be thrown into the dustbin. आप तो, you live by the constitution. Barrister Owaisi Sahab respects the constitution and everybody respects him for respecting the constitution. But what does Akhtarul Iman, your party chief in Bihar, say? He says मस्जिदों के गुंबद तोड़े जा रहे हैं, टोपियां उछाली जा रही हैं. मुसीबत यह है कि मोदी जब से आया है मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है. कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीएए के नाम पर किया गया, लेकिन असम में जब खेल खराब हुआ तो मस्जिद मकबरों को निशाना बनाएगा. हम गर्दन काटने को तैयार हैं. अब काटने हैं या कटवाने हैं मुझे पता नहीं. हम गर्दन कटवाने को तैयार हैं, लेकिन मुल्क के आईन को नुकसान नहीं होने देंगे. It has come down to this. Has it come down to this? Has the constitution now gone? Are we talking about killing each other now? Well, Navika, I'll answer to your question. First, let me answer it. Sudhanshu Trivedi is sitting here. He became the member of parliament by taking oath on the constitution, but he does not follow the constitution. This is the main intention, the main belief of the BJP. They don't follow the constitution. In fact, the RS also now they want to finish the secularism also. Otherwise, he would have very well said that the constitutional entitles us to protest peacefully. We are protesting peacefully. What harm is there? Now, since the day one when the Waqf Amendment Bill was introduced, we had raised our objections saying that this is totally unconstitutional. It is violation of Article 14, 15, 16, 25, 26 of the Constitution.
and we objected to it. A JPC was from our party president was a member of the JPC. Everywhere in the country they went over. Our party president wrote no objections, everything about the Waqf bill. He gave details of everything, but some of the statements were truncated when the entire report was produced. And ultimately the government passed the bill, which is unconstitutional, pending before the Honorable Supreme Court, and it is sub judice. But let me clarify and say clearly that earlier the Places of Worship Act also was passed by the Constitution. Then why do they move the courts? It is pending there. It is pending for hearing. Now the farmers' bills therefore introduced by the Modi government after about 1 year's protest. The Modi government they had to take up back the farmers, and we are also hopeful that the Modi government will take back this unconstitutional black law which is introduced by them, which is totally unconstitutional. And like the farmers will with the Modi government took back, we are confident that they will also take. And I'll make it and say and reiterate that unless and until the Modi government takes back the entire Waqf amendment law, the bill, we will protest constitutionally, peacefully, which is provided to us by the Constitution. Now you spoke about our party's president from Bihar, Akhtarul Iman. He said that हमारी जब से बीजेपी सरकार आई है, हमारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है. What wrong did he say? Tell me. In the last 11 years, what have we seen? Since the BJP has come to power, only one thing they have done in the country is spread hatred. Hatred among whom? The Muslims, the minorities. And what they hate our hijab, they hate our food habits. Now they hate our loudspeaker. They hate our azan. Now they want to interfere and introduce certain acts into our Sharia, into our Waqf. Our Waqf property, this property belongs to Allah. Our forefathers have donated it for the purposes of having some sawab. That was the niyat. And now the Modi government wants to usurp it and give it to their industrialist friends. So should we not object? Should we not protest? When the Constitution, as you spoke about the Constitution, it has given us a right and we are protesting. But what is the BJP doing? Navika, when you said Gal Kata Denge, that is not the way. We have stated so that until the bill is taken back by the Modi government, we will protest peacefully, and we will be doing. The All India Muslim Personal Law Board has since the beginning stated that we will protest all over the country. Earlier they say wear a black band on a Friday, pray namaz. Lakhs of people, crores of people in the country. Being the key word. One day they said protest peacefully being the key word. Anand Ranganathan, I draw your attention to the speeches that were made there at the Gandhi Maidan in Patna. And can you tell me if these amounted to peaceful and very, very courteous speeches that were being made there, where we were talking about the Sharia coming, where we were talking about throwing the laws into the dustbin. All this peaceful, really? Good evening, Navika, and good evening to my fellow panelists. It's Bhaduria was the member of parliament and how he abused the Navika, 35 minutes I've been waiting. I'll come back to you, Waris Pathan. Go on, Anand. My turn has come after 35 minutes, and I know in a 1 hour program I'll get not more than 2 minutes. निचोड़ के मैं आपसे 30 seconds ले लूंगा. लेकिन जब तक मेरी टर्न आई है, इतना झूठ बोला गया है कि नाविका, आई बेग ऑफ यू कि मुझे कम से कम 30 सेकेंड्स दीजिए वो झूठ एक्सप्लेन करने को. उसके बाद मैं मुद्दे पे आऊंगा विद योर परमिशन. अब पहले मैं नवल जी को टैकल करता हूं. लेट मी इंडल्ज इन अ बिट ऑफ नेवल गेजिंग. इन्होंने कहा कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म नहीं चाहता है वो कॉम्युनल है. बाय हिज लॉजिक, फॉर 30 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, for till 1976 when during the emergency the word secularism was introduced, Congress was communal. अगर इनकी हिम्मत है तो बोल दें तब तो सेकुलरिज्म नहीं था. मतलब ये लॉजिक लाए. और वारिस पठान साहब फिर से शुरू हो गए हिंदू मुस्लिम. बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं. हम सब एक हैं, 1.4 बिलियन पीपल. मैं बोल बोल के थक गया. नाविका, मैं हिंदू हूं लेकिन मुझे सवैयां खानी होती है, मैं वारिस पठान साहब के घर से लाता हूं. वारिस पठान साहब मुस्लिम हैं. इन्होंने जो विग पहना हुआ है वो तिरुपति जो हिंदू जाते हैं उनके बालों से बना है. कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज व्हाई ब्लेम द इस्लामिस्ट एंड जिहादीज एंड द ओपोनेंट्स एंड द प्रोपोनेंट्स ऑफ शरिया. ब्लेम दोज ऑन हुज शोल्डर दीज बिगट्स रेस्ट देयर गन्स इन फायर. पॉइंट फंडामेंटलिस्ट की नहीं है. पॉइंट है जो इनको बना रखा फंडामेंटलिस्ट. फॉर 30 years the Supreme Court never found illegal an act that gave Muslims the power to claim any property as their own, that allowed them to annex any land housing a functional mosque. But today it is sitting to adjudicate whether a version that curtails these draconian accesses is illegal or not.
For 30 years, the Supreme Court never found unsecular an act that gave Muslims the power to use thousands of crores of taxpayers' money to conduct survey of religious property. For 30 years, the Supreme Court never found unjust that a parallel extrajudicial tribunal decided with finality the fate of the aggrieved whose land and property was usurped. But today, it is sitting to adjudicate whether a version that curtails these draconian excesses is illegal or not. And you still claim that this country, Navika, is not a banana republic. The fact of the matter is that we are being guilt-tripped into giving away our property, our schools, our temples, our rights, and finally, our faith. Look, 30 seconds. I have nothing against the Waqf board. Why should anyone? Countless boards, charities, NGOs exist. The problem for me was the Waqf Act that weaponized the Waqf board. World over, disputes over property are settled using courts and existing laws that are community and religion agnostic. Why should a particular religious community be armed with another set of laws, those that are patently discriminated towards members of another community as a primary institute of defense? Tell me, आप मुझे ये बताइए, 30 सेकंड में आपके लेना चाहता हूं, बहुत सिंपल से एक आर्गुमेंट रखना चाहता हूं, बहुत सिंपल आर्गुमेंट. Time nahi hai for more arguments. There are so many arguments that are already floating around. But Sanjay Jha, really, Rahul Gandhi sends a message there that the Imarat-e-Sharia is going to protect the Constitution. They should make the awareness of the Constitution. Really? Navika, I want to make two short points here. We are talking about a political entity. The Prime Minister of this country, while campaigning in 2024, talked of कौन भैंस चोरी कर लेगा, मंगलसूत्र उठा के भाग जाएगा, मटन, मछली, मुजरा. They will put Muslims in the Indian cricket team. When this kind of dog whistle politics is coming from the top, you have corrupted the entire political discourse in this country. So you're admitting that Rahul Gandhi's politics has been corrupted. Please respond, Sudhanshu Trivedi. We have reached a pitiable level in our country. When well-led person, when a person like Sanjay Jha uses to use this word, and who is bringing down the discourse, कि Hindu is a virus, it is a bacteria, it is a corona, it is HIV, and eradication of Sanatan Dharma. Sir, शर्म नहीं आती आप लोगों को, आप क्या बोलने की बात करते हैं? And it was not a statement. It was 3-day conference. And in the foreign countries, dismantling global Hindutva. Hindutva तेरी कबर खुदेगी. What you are talking about, sir? And you are saying that the hate has been propagated from the other side. अरे माना साहब, आपको कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए कितना झुकेंगे? And just one more fact I would like to put. ये बताइए साहब, मुगलों के जाने के बाद हालत ये हो गई थी कि दिल्ली का एक बादशाह था शाह आलम, जिसके बारे में कहावत कही जाती थी कि सल्तनते शाह आलम दे लाल किले ते पालम, यानी सिर्फ लाल किले से आज के IGI एयरपोर्ट तक उसकी हुकूमत थी. फिर ये वफ के सारी हुकूमत ही नहीं थी, जब उसके पास कुछ था ही नहीं, ये कहां से निकलने लगे? 1707 के बाद महाराष्ट्र में कोई कंट्रोल नहीं रह गया मुस्लिमों का. 240 साल के बाद अचानक ये कहां से मालिकाना हक निकलने लगा? बस मैंने कह दिया, जैसे ये शहंशाही नहीं खुदाई थी. मैंने कहा जमीन हमारी हो गई. बस अब नो प्रूफ इज रिक्वायर्ड एंड योर गवर्नमेंट हैज सक्कम्ड टू दैट थिंग. Well, ladies and gentlemen, where is the hate stemming from? Well, that is the question that was asked by Sudhanshu Trivedi. Well, mohabbat ki dukaan aur itna sara hate. Sanjay Jha, think about it. And we asked people of India, and our poll question was, Tejaswi wants to trash Waqf law. Is this the emergency mindset? Yes, say 75% of the people. No, say 21% of the people. Can't say 4% of the people. Well, you've seen what our viewers think, what people who have voted for this thing, and clearly at this point, for all those who support Sharia, it's a wake-up call. There are courts in the country. The Supreme Court is hearing the case on Waqf bill. Why then wait for Sharia? Why then trash the bill and throw it in the dustbin? That is the only question we are asking. Thank you very much to all my panelists for joining me on debate number 1.